देवी और सज्जनों, राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया बैठ जाएं। Request you all to be seated. सुप्रभात। पूर्व सैनिकों के सम्मान में आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे 2025 में एयर मार्शल नगेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड, शीर्ष सैन्य अधिकारी, विशेष अतिथिगण, राष्ट्र का शौर्य बढ़ाते हुए सामने बैठे सैनिक और वीरों के वीर पूर्व सैनिक समूह, यहाँ मौजूद सभी देशभक्त दर्शकों का कार्यक्रम के आयोजक एयरफोर्स स्टेशन जालाहली की तरफ से मैं विंग कमांडर विनोद चंद्रा स्वागत करता हूँ। Good morning to all. I, Wing Commander Archana, on behalf of Air Force Station Jalahalli, welcome you all to this special occasion of 9th Armed Forces Veterans Day 2025, a day dedicated to remember the sacrifices, courage and commitment of our veterans. It is both an honor and a privilege to stand before you as we pay tribute to those who have dedicated their lives to safeguard our nation. Our veterans have fought not just territory, but for the values that we hold dear: freedom, justice and peace. पूर्व सैनिक, राष्ट्र जिन्हें बहुत सम्मान से देखता है, एक ऐसा नाम जिनका नाम सुनते ही सर आदर से झुक जाता है, एक ऐसा नाम जो होठों में आते ही अपने आप हाथ सैल्यूट के लिए उठ जाते हैं, एक ऐसा नाम जिसके लिए पूरे देश का हाथ प्रणाम की मुद्रा में उठ जाता है। देश साक्षी है कि पूर्व सैनिकों ने आखिरी श्वास तक राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र स्वयं से पहले को ही अपना आत्मध्येय माना है। From the battlefield of 1947-48, 1962 and 1971 to the peacekeeping missions abroad and the challenges faced here at home, our veterans have stood tall in the face of adversity, sacrificing their own well-being for the greater good of the nation. I request Air Commodore Santosh K.B. Hegde, Air Officer Commanding Air Force Station Jalahalli, to deliver the welcome address. Air Commodore Santosh K.B. Hegde. Air Marshal Nagesh Kapoor, AVSM VM, AOCNC Training Command, Lieutenant General Jatinder Kumar Gera, Commandant AAC Center and College, senior functionaries of all three services, distinguished guests, and most importantly, our esteemed veterans. It is indeed an honor and a privilege for me to extend a very warm welcome to all our veterans on this momentous occasion of the 9th Armed Forces Veterans Day. Today we gather to honor and celebrate the exceptional men and women who have dedicated their lives
to the service of this great nation. Your sacrifices, your courage, and your unwavering commitment to duty have built the foundation of security and peace that we enjoy today. We are deeply honored to have Air Marshal Nagesh Kapoor, AOCNC Training Command, as the chief guest for the event. Sir, you have been the guiding force for the planning and conduct of this event. Your presence here reinforces the value of significance of this day and your commitment towards the welfare of veterans. On behalf of everyone, I extend a very warm welcome to you, sir. I also extend a very warm welcome to Lieutenant General Jatinder Kumar Gera, Commandant ASC Center and College, Major General B.T. Matthew, AVSM, YSM, GOC, KNK Subedar, senior functionaries from Headquarter Training Command, Commodore B.B. Bellari, Station Commander of Naval Detachment, and all the distinguished guests for having spared their valuable time to be a part of the Armed Forces Veterans Day. Today's event is not just a celebration of the achievement of our veterans, but also an opportunity to acknowledge the ongoing bond that we share regardless of the years that have passed by. It is a day to reconnect and take pride in the fact that the legacy of our veterans continues to inspire generations of service members and citizens alike. As we gather in your presence, we are reminded of the values of the armed forces uphold. Values of integrity, discipline, courage, and resilience. Your contributions have not been only in the defense of our borders, but have also shaped the very essence of our national identity. To all our veterans here, from the Army, Navy, and the Air Force, I offer my sincerest thanks for having graced the occasion and the deepest gratitude for the service to the nation. As a part of the event, various stalls of Directorate of Veterans, Sparsh, major banks, family welfare, RCHS, ECHS, medical specializations from the command hospital, and various other facilities have been set up for the benefit of our esteemed veterans. We hope that these arrangements will provide you with an opportunity to not only connect with your old comrades, but also enable you to avail resources and services that will enhance your well-being. The event is dedicated to ensuring that you, our veterans, continue to be cared for and honored. You remain an integral part of the Armed Forces family, and we remain committed to serving you just as you have so nobly served the nation. Once again, thank you for being here today. Jai Hind. Thank you, sir. The legacy of a veteran is written not just in medal and honor, but in the quiet strength that inspires every generation to rise to the call of duties. यहाँ मौजूद देशभक्त कहते हैं, मेरी वर्दी है जो तैयार, जाऊंगा मैं फिर सीमा पार, उठाऊंगा मैं फिर से बंदूक, कर जाऊंगा अब फिर से कूच, क्योंकि हमें विश्वास दिलाना है देश को कि राष्ट्र के लिए रात अब भी बाकी है, आग अब भी बाकी है, आग अब भी बाकी है। और अब मैं कार्यक्रम के अगले वक्ता श्री पार्थ प्रतिम विश्वास एएओ प्रतिनिधि पीसीडीए से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया 2 शब्द कहें। श्री पार्थ प्रतिम विश्वास। सुप्रभात, नमस्कार।
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एयर मार्शल श्री नगेश कपूर, एवीएसएम, वीएसएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल जतिंदर कुमार गेरा, कमांडेंट एसी सेंटर एंड कॉलेज, बेंगलुरु, मेजर जनरल वीटी मैथ्यू, एवीएसएम, वाईएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग कर्नाटका एंड केरला सब एरिया, कमोडोर वीवी बेल्लारी, बीएसएम, स्टेशन कमांडर, नेवल स्टेशन बेंगलुरु, सभी वरिष्ठ अधिकारियों, पूर्व सैनिकों तथा देवी और सज्जन, मैं श्री पार्थ विश्वास, सहायक लेखा अधिकारी, रक्षा लेखा विभाग, पीसीडीए बेंगलुरु तथा रक्षा लेखा विभाग की तरफ से मकर संक्रांति की इस पावन अवसर पर आप सभी को नवे आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहां भारतीय सेना, नौसेना तथा वायुसेना देश की सेवा में हर वक्त तत्पर है, वहां आपकी सेवा में मौजूद रहना रक्षा विभाग की धर्म भी है और कर्तव्य भी। और मुझे ये बताते हुए फक्र हो रहा है कि रक्षा लेखा विभाग अपना ये कार्य बखूबी करता आया है और आगे भी करता रहेगा। हमारी सेवा सिर्फ सेनाओं में कार्यरत सैनिकों के लिए नहीं, बल्कि उनके सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहता है। सरकार की पेंशन योजना जो कि सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बनाई गई है, उसे सही तरीके से और पारदर्शी रूप से अमल करने तथा लागू करने के लिए रक्षा लेखा विभाग के पीसीडीए पेंशन ट्रैकर हमेशा से कार्यरत रहा है। पेंशन सिस्टम को और भी पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट तथा विश्वसनीय बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से स्पर्श नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। यह एक वेब बेस्ड रियल टाइम इंटरैक्टिव पोर्टल है, जिसके माध्यम से पेंशन डिसबर्समेंट को लगभग फेसलेस बनाया जाना संभव हुआ है। स्पर्श सिस्टम को सन 2021 में लॉन्च किया गया और धीरे धीरे देश के लगभग सभी डिफेंस पेंशनर्स को इसमें शामिल कर लिया गया है। हालांकि जैसे आप जानते हैं, हमारे देश की सेना विश्व के सबसे बड़ी सेनाओं में आते हैं। ऐसे में लगभग 35 लाख सेनाओं की डेटाबेस को ऑपरेट या मैनेज करना किसी भी चैलेंज से कम नहीं था। लेकिन कुछ कदम आपने बढ़ाए और कुछ कदम हमने, और देखिए आज ये कारवां कहां तक आ पहुंचा। अब सिर्फ 2.5 लाख के आसपास पेंशनर्स ही माइग्रेट होना शेष है, जो कि बहुत ही जल्द संपूर्ण कर लिया जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको अभी भी स्पर्श पीपीओ नहीं मिला तथा माइग्रेशन शेष है, कृपया इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। यह एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो कि आपके रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए पेंशन्स की आपसी तालमेल से जल्द ही संपूर्ण कर लिया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा स्पर्श सिस्टम के बारे में आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा, जो कि अक्सर पेंशनर्स को भ्रमित तथा विचलित भी करती है। जैसे कि पोर्टल में लॉगिन कैसे करें, लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा। लॉगिन तो हो गया, लेकिन डेटाबेस में बहुत सारे तथ्य गलत है, जैसे पत्नी का नाम, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ में सुधार की आवश्यकता, ऐसे और भी कई नहीं। आपको बताना चाहूंगा कि स्पर्श पे लॉगिन आईडी और कुछ भी नहीं, बल्कि वो आपकी 12 अंक के स्पर्श पीपीओ नंबर और उसके अंत में 01 सर्विस पेंशनर्स के लिए और 02 फैमिली पेंशनर्स के लिए है। अगर आपको पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ तो कृपया फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करें और मोबाइल में पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। अब जब भी स्पर्श पोर्टल में कोई भी करेक्शन या सुधार इनिशिएट करते हैं, तब वो पहले आपके रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा अप्रूव होना आवश्यक है। ऐसे में आप जरूर सुनिश्चित करें सभी डॉक्यूमेंट्स को आप सही एनक्लोज कर रहे हैं। अपना मोबाइल और ईमेल आईडी को हमेशा अप टू डेट रखें। ओल्ड एज पेंशन और साइबर फ्रॉडस्टर के बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। ऐसे में अपना पेंशन डिटेल्स तथा ओटीपी वगैरह किसी से भी कभी भी फोन पर शेयर ना करें। आपकी सेवा में 99 डिकेंसन रोड पर स्थित स्पर्श सर्विस सेंटर हमेशा से कार्यरत है। कृपया जरूरत पड़ने पर हमें विजिट करें। हम आपको यथासंभव सेवा देने की और आपकी सारे समस्याओं की हल करने की हर संभव कोशिश करेंगे। इस अवसर पर आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, उन्हीं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। बाधाएं आती है आए, हीरे प्रलय की घोर घटाए, पापों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे जदी जलाए, नीचे हाथ से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। Veterans are the heroes who served and legends who inspire. So for all the legends, I request Group Captain Ranveer Banerjee, Group Captain Air Veterans, Officers Vertical from GAV to enlighten our heroes with his informative address. Group Captain Ranveer Banerjee. Air Marshal Nagesh Kapoor, APSM, AOCNC Training Command, all senior military dignitaries, respected elders, veterans present here, ladies and gentlemen, congratulations today for the 9th Armed Forces Veterans Day. It is a great opportunity for me, from Directorate of Air Veterans, to be present here and share few things, although the time constraints restricts me, but however I will touch upon the salient aspects which will help you out, जो आपको मदद करेगा थोड़ा समझने के लिए डीवी का फंक्शनिंग और जो दिक्कतें आ रही हैं। मेरे पहले जो स्पीकर थे पीसीडीए से, उन्होंने बता दिया कि स्पर्श लुक्स वेरी आइडियल, प्रेटी यूफोरिक, लेकिन उसमें फॉर द वेटरन्स काफ़ी दिक्कत हो रहा है। आप लोगों को पता है कि मोस्ट ऑफ द कॉल्स टू डीएवी, दैट मीन्स on an average per day 250 calls and 400 mails we receive from the veterans to address their issues, starting from unable to log in. Now, few days back we had a meeting in the South Block. Therein one very senior functionary from CGDA, उन्होंने बताया कि veterans जो स्पर्श साइट है उसको डेली न्यूज का ऐप जैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब सुबह उठ के लॉग इन कर लेते हैं। सो द बैंडविड्थ गेट्स रिस्ट्रिक्टेड। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द बैंडविड्थ, बट आई कैन ओनली से कि परहैप्स द ऑब्जर्वेशन हैज सम काइंड ऑफ रिलेवेंस, क्योंकि जब दिक्कतें होते हैं तो हम रात में भी लॉग इन करते हैं, सुबह भी लॉग इन करते हैं, शाम को भी लॉग इन करते हैं। जब इतने लोग एक साइट पे लॉग इन करेंगे, करीब 40 lakhs, इफ आई टेक हाफ ऑफ इट 20 lakhs लॉग इन, ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल बी जैम्ड, इट विल नॉट फंक्शन। पेंशन महीने में एक बार ही मिलती है, लास्ट वीक जब एसएमएस आएगा, उसके बीच में तो पैसा मिलना नहीं है और बढ़ेगा नहीं। तो मेरा यही गुजारिश रहेगा हमारे सीनियर से कि जब जरूरत नहीं पड़े काइंडली लॉगिन मत करिए, क्योंकि जब तक बैंडविड्थ बढ़ नहीं जा रहा है, जिसका प्लानिंग आगे है, काइंडली बिना जरूरत पे लॉगिन मत करिए। देयर आर मेनी मेजर इश्यूज इन स्पर्श। आई कैन टेल यू माय एक्सपीरियंस, इवन एयर मार्शल्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू एवीएम। Once one leader has been made major in an army unit. Similarly, one major in army unit has become group captain in Air Force. This kind of problems are there. It is happening in the slightly junior ranks also. तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि सिस्टम नया है स्पर्श, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है पीसीडीए साइड से, पीसीएस का सहारा लेके, लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज जो पहले प्लानिंग नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट का डिजिटाइजेशन का ट्रस्ट में जो किया जा रहा है, थोड़ा उसमें डिफिकल्टी आ रहा है। Their major issue has been not getting orop 3. I know command headquarters might be approached same way DAV is being approached to orop 2 और orop 3 मिला नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे हमारी पूर्व स्पीकर जो थे उन्होंने बताया कि there are some issues in the Sparsh PPO. अगर PPO में नेट क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है, that means क्योंकि orop में नेट क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर ही पेमेंट किया जाएगा। अगर नेट क्वालिफाइंग सर्विस मेंशन नहीं है कि आपने 29 साल सर्विस किया है, कि आपने 33 साल सर्विस किया है, ऑटोमेटिकली स्पर्श का जो रूल इंजन है जिसमें से कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो ये दिक्कत है, और डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए या डेट ऑफ डिस्चार्ज डालने के लिए देयर आर मेनी इश्यूज, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस को भी आई कैन से एग्रेसिवली एड्रेस करना है, लेकिन उसके पहले वेटरन को भी देखना है कि उन्होंने सही डेट डाला है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली पीपल हु हैव रिटायर्ड लॉन्ग बैक, उन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा कि उनका डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, उनका स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ क्या है। इस दिक्कत में क्या हो रहा है कि orop का डिसबर्समेंट हो नहीं पा रहा।
और जो लोग बैंक में अभी तक हैं, करीब few thousands of people are still there with banks. जो बैंक के साथ हैं, मुझे SBI से मीटिंग के इतना पता चला था कि 31 दिसंबर तक वो लोग ये रिजॉल्व कर देंगे कि बैंक के जरिए में भी OROP 3 इशू किया जाए. It is just 1 week past. I didn't have the guts to ask SBI कि हुआ है कि नहीं. मैं जाने के बाद जरूर प्रयास करूंगा. पर अगर SBI ने 31 दिसंबर बोला है, तो 31 जनवरी तक टाइम दे दीजिए. मेरे ख्याल से हो जाएगा. आज वायुसेना वायु संपर्क ऐप, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है जो स्पर्श के लिए हमारे वेटरन्स को मोबाइल में मदद करेगा लॉगिन करने के लिए. ये आपको गूगल प्ले में मिल जाएगा, प्ले स्टोर में. और इसके सहारे आप जो एक्टिविटी करते हैं स्पर्श साइट पे, वही काम आप इसमें कर सकते हैं, इंक्लूडिंग जो कोर्समेट्स वगैरह आप लोगों के साथ रिटायर हुए होंगे, उनका भी आप डिटेल्स देख पाएंगे. The full complement of the app will be available to you on 31st March. लेकिन आज ये लॉन्च हो रहा है, आप लोग कोशिश कर सकते हैं. It will help you all to do certain things which are not otherwise doable in the present Sparsh site. Because Sparsh is geo-fenced, मतलब जो बाहर रहते हैं, जो NRIs हैं हमारी, not NRIs, जो हमारे veterans abroad रहते हैं for some reason, वो access कर नहीं पाते हैं, सर्टिफिकेट देने में दिक्कत होता है. sparsh.nri.gov.in has been launched. तो आप लोगों ने एडवाइस कर सकते हैं जो आपका रिश्तेदार या फ्रेंड्स बाहर रहते हैं to submit timely life certificate, because that is the only reason why the pension is not getting credited. Timely वो submit कर सकते हैं through this sparsh.nri.gov.in. इसमें से कर सकते हैं. Sparsh will continue to be geo-fenced as per the direction of the central CERT. तो जब तक ये प्रॉब्लम पूरा उलझ ना जाए, तब तक ये एटलीस्ट इस के सहारे ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. Now last, I will take 1 minute to avail all kind of benefits जो दिक्कत हो रहे हैं. First try out with the local stations. आप लोग खुशनसीब हैं कि आप बेंगलोर में हैं, ट्रेनिंग कमांड बगल में है, very pro veterans. जो भी आप लोगों का दिक्कत होगा, यहाँ का जो स्पर्श सेंटर है, यहाँ का जो एयरफोर्स एसोसिएशन है, पर्टिकुलरली फॉर एयर वेटरन्स, जाके पहले उनसे मिलिए. अगर वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, then approach DAB. Otherwise, we have seen that 80% of cases can be resolved at the Sparsh veteran cells which are available at the local stations. We have got around 121 stations who are equipped with Sparsh cells. So इसका सहारा लीजिए, इससे काम पूरा बन जाएगा. और we are also maintaining very close liaison with CGDA Central, जहाँ पे pcda स्टाफ और हमारे बंदों की ट्रेनिंग होते रहते हैं, and of course back-end liaison with TCS, so as to resolve the issues of our veterans. But because it is a very big software system, solving is not very easy. It is possible, but it takes time. अगर कोई भी चीज टिंकर किया जाए, it has got a far-reaching impact. इसीलिए थोड़ा दिक्कत आएगी, but hopefully अगले कई महीनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. और मैं जाते जाते आप लोगों को थोड़ा सा 2 शब्द बोल के जाऊंगा कि जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं. जो पानी में नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन आप लोगों के जैसे जो लोग खून और पसीने में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं. थैंक यू. Thank you, sir. अब मैं कार्यक्रम के अगले वक्ता ब्रिगेडियर MB शशिधर, रिटायर्ड डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर एंड रीसेटलमेंट से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया 2 शब्द कहें. ब्रिगेडियर MB शशिधर, रिटायर्ड. Morning, ladies and gentlemen. सबसे पहले wish you all a very happy Veterans Day. Respected CNC, Air Force Training Command, Air Marshal Nagesh Kapoor, AVSM VM, and other senior military officers, serving officers, and veteran officers and other veterans.
at the very outset, I take this opportunity to thank the organizers for giving me this opportunity to speak out here. Such a big forum, I haven't had an opportunity to ever speak regarding our department. To start with, I will show the location of my office because most of the people don't know where the office is. And in short, I would just tell that for anything and everything, I would request that if you visit our office or you communicate to our office, we will be more than grateful to help you out. Whether it is regarding pension, whether it is regarding the canteen, whether it is regarding the ECHS, we will direct you to the right person. And also with regards to the state government, any issues which are pending, we will try and address that. The location is very clear. It is on the confluence of the Residency Road and it's in the Karepa Bhavan, which is Museum Road and Residency Road at the junction of the Residency Road. We have parking because most of the queries which comes to us is that whether there is parking or not. We have a basement parking. Next, our role and mission, very academic, which is on the slide. Basically, we dispense all types of benefits which the state government gives to the veterans. We are also involved in giving the identity card, which is of value out here in the government in the state of Karnataka. And we give the children of the ex-servicemen the certificates which is required for furthering their professional careers. Of course, with respect to rehabilitation and resettlement, we haven't been really pursuing, or we haven't been proactive in that because of the simple reason that there are other portals also, and there are other examinations which people appear and then get through. This we need to focus on and ensure that we try and rehabilitate and resettle everybody who comes out here in the state of Karnataka. Role. Next, please. This is the role in a border perspective. We maintain census record. This unfortunately is not digitized. We are still working on it, and there is a common digital platform which is being created at the Kendriya Sainik Board. If this comes through, then possibly we'll have everything digitized, and to a large extent it will solve our issues with respect to identifying the person. We disperse state benefits to all battle casualties and widows and gallantry award winners, and we also settle grievances with respect to pension, property matters and any harassment which takes place. We also have hostels and Sainik rest houses in places in the smaller districts, and people can avail that. We have an organization which comprises of about 13 offices. 2 are located in Bangalore, with the headquarters also placed in Bangalore. And all 31 districts of the state are distributed amongst these 13 offices. You call it the clientele or the ecosystem. Next. This is the type of strength what we have got, not comparable to other states. But definitely, yes, veteran is a veteran, whether he hails from Punjab or from Himachal. This is the strength we service. Some benefits which is of major interest to everybody is as shown on the slide. On the left column is what is given to the martyrs, and the right is what is given to the battle wounded. And some benefits which is given to the ex-servicemen and the dependents. The last bullet is we are still working on it. The government has agreed to enhance the number of seats,
and we have also insisted that they give it in a good college, reputed college, and desired disciplines, common, what you call, most sought after disciplines, which recently, yesterday, we had a discussion with the Chief Secretary and they have agreed to work on that. Next. Uh, 50% concession or rebate on the property tax is likely to get enhanced to 100%. The proposal is with the government. And this is financial assistance to paraplegic rehabilitation center, which is at Pune. We give about 1.5 lakhs every year per person. Next. This is what we give to gallantry award winners and devotion to duty, and this got enhanced just about 2 years back, and I think we are comparable to the other states as well. One last issue is with respect to Sparsh. This Sparsh bashing is been going on for quite some time. And honestly, this is because of lack of awareness and the type of, what do you call, the challenge which Sparsh people are facing. There are teething problems because the interface is probably lacking. The software developer is a labor. And what input and what is the type of input which has to be identified or extracted is possibly where we are missing this one. Initially, even most of the veterans who had come to me and gave also the impression that Sparsh is not a successful program. But after almost 1 year, with most of the teething problems solved and still there are some more problems which are there, I think it's one of the best programs we can ever think of, and things will become much easier and simpler as we go by. And the next issue is, I request all the veterans, in case they have a problem with respect to not logging in or having other issues, that can be resolved both at our office also and also at the DPDO office, which is close by at Dickinson Road. With this, I conclude. Thank you very much, and once again wish you all a very happy Veterans Day. धन्यवाद श्रीमान। आज हमारे सामने जो दर्शक बैठे हैं, इतिहास के सुनहरे अक्षर यही तो हैं, सब कुछ सही तो है, कुछ लोगों के सीने पर वर्दियां तनी हैं, कुछ बेशक पूर्व सैनिक पर कड़क पहले जैसी ही बनी है। वही चाव है, मूंछों में वही ताव है, अपार देशभक्ति, भुजाओं में वही फौलादी शक्ति। देश के लिए कुछ भी करने का इरादा रखते हैं, अब भी जीत हासिल करने का मादा रखते हैं। The bravery of a veteran is not measured by the victories on the battlefield, but by their enduring spirit and dedication to the greater cause. Our veterans have not only served in times of conflicts, but have also contributed immensely to our society in peace. Many have gone on to serve as leaders in our communities as educators, entrepreneurs, and mentors, continuing their legacy of service even after their military careers have ended. I request the Chief Guest, Air Marshal Nagesh Kapoor, to address the gathering. Senior officers here present, officers and retired officers who traveled to be here today from various organizations that look after our esteemed veterans. The veterans themselves, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is indeed a matter of great honor to be here in this august gathering
of senior veterans on this momentous occasion of the Armed Forces Veterans Day. That it falls on a day that the whole nation celebrates otherwise as well. I don't know whether it is a matter of coincidence or it was deliberately planned to be so. But the whole nation is celebrating in one manner or the other, not only the Uttarayan, Sankranti, Bihu, Pongal, Bogi, or whatever you have in various parts of the country, but I am personally convinced that the whole nation presently celebrates each one of you sitting out here as well. As I look around, I see those who have shaped the history and destiny of our services and in turn that of our great nation. Each one of you has served with unwavering dedication, embodying the highest ideals of duty, honor and commitment to the country. Today, we come together to celebrate your illustrious careers in uniform and also to recognize your contribution in nation building post your retirement. From the icy heights of Siachen to the dense jungles of the Northeast, from safeguarding our maritime frontiers to dominating the skies, your service has been the bedrock of India's security and sovereignty. You have faced adversities that most cannot fathom. And when I say most cannot fathom, I include us, the younger generation as well. Because when we came into the service, it was because of your efforts that we had it relatively easier. You have emerged victorious time and again with courage and resilience. It is your sacrifices that have ensured our nation's freedom and provided a secure environment for its growth. Many of you have been part of the 65 and 71 Indo-Pak wars. Your heroic efforts during these wars not only safeguarded our territories, but also led to the liberation of Bangladesh and reshaping the geopolitical landscape of South Asia. The Kargil War of 1999 is another testament to the courage and determination of the Indian Armed Forces. Such acts of valor have inspired generations and will forever remain etched in history. Retirement from active service has never meant retirement from service to the nation. Stepping out of uniform into unfamiliar territories is never easy, and the transition can be trying and demanding. Discipline, perseverance, commitment to the aim, capacity to withstand stress and hardships are the hallmarks of veterans, leading to success in every single domain outside military life. Many of our veterans have transitioned seamlessly into public service, bringing their leadership skills and strategic thinking to the administrative and political realms and continue to uplift society and strengthen the fabric of our country. I'll name a few as I go forward. Field Marshal Cariappa, the first Commander-in-Chief of the Indian Army, in whose honor we celebrate today as Veterans Day, set a precedent for service to the nation beyond military through various social welfare activities. He laid the foundation on the cherished ideals of our leaders at the time of independence, as also the collective wisdom of the armed forces. These ideals have long since remained the cornerstone of nation building, and the armed forces have proved to be amongst the most important national institutions time and again. I also request you to consider the example of Major General Ian Cardozo, whose resilience and determination, even after losing a leg in combat, exemplifies the indomitable spirit of the armed forces. Post-retirement, his contribution to literature and his advocacy for disabled soldiers has had a profound impact on society. Moving on, Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. After retirement, remained active in public life, mentoring young leaders and serving as an inspiration for generations to follow. In the same vein, Air Vice Marshal Harjinder Singh, known for his engineering prowess during his service, contributed immensely post-retirement in supporting the growth of India's aviation industry. Rear Admiral R.K. Shrawat became the CMD of Mazagon Dock Limited
and contributed immensely towards advancing India's naval capabilities. I take all these names because these are the guiding lights of the veteran community who continue to shape the future of this country even after retirement. He fostered, I'm talking about here Admiral Sherawat, fostered international partnerships in the defense sector. Commander Abhilash Tommy, and these are closer to present day, and Commander Dilip Donde, naval veterans who achieved remarkable feats in solo circumnavigation of the globe, while in service continue to contribute significantly to the sailing community, adventure sports and maritime awareness in India. Many have chosen to enter social service and politics and excelled in these fields to become parliamentarians, ministers and chief ministers. We also have examples like Shri Anna Hazare, a former soldier renowned for his efforts in rural development and advocacy for strong anti-corruption laws promoting transparent governance. Veterans have also made their mark in the corporate world with their leadership and discipline honed in the military to excel in business. While Captain Gopinath, war veteran of 71, redefined the aviation industry in India, late Captain Krishnan Nair became one of the most successful businessmen and founded the Leela Group of Hotels. I am proud to also learn that there are many veterans sitting in this gathering who have become entrepreneurs and are providing job opportunities in this region. You, our veterans, are the living embodiment of commitment and selflessness. Your diverse contributions in fields such as governance, academia, corporate leadership and social welfare have enriched our nation in countless ways. You are role models for discipline, integrity and patriotism, qualities that India needs now more than ever. As we face new challenges, whether it be ensuring sustainable development, fostering technological innovation or shaping the upcoming generation, your expertise and mentorship can guide the way forward. India's youth look up to you and your stories of courage and dedication as a beacon of hope and inspiration. As we celebrate your achievements, I urge each of you to continue being active participants in our country's progress. Please continue to mentor the next generation, share your wealth of knowledge, and lead initiatives that promote unity and national pride. Your contributions, both seen and unseen, will continue to shape the destiny of our nation. As I conclude, let me express my deepest gratitude to each one of you. The nation owes a debt that can never truly be repaid. Your legacy is not just in the battles won or the honors earned, but in the lives you have touched and the nation you have built in uniform and beyond. Thank you for your service, your sacrifices, and your unwavering commitment to India. Jai Hind. धन्यवाद श्रीमान, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए अत्यंत आभार। It is now time to felicitate our veterans who have completed 80 and 90 glorious years of their lifetime. I request our chief guest, Air Marshal Nagesh Kapoor, to felicitate our veterans. देश की रक्षा के लिए आपने जो कुछ किया है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम आपके साहस और समर्पण को सलाम करते हैं। As the chief guest walks among our heroes, we honor their legacy. Among them are the veterans who have seen country transition into an independent nation. They served with wholeheartedness in a pre-independent nation and with distinction in a newly independent nation.
यूट्यूब आएगा आएगा वो तो यूट्यूब लेकिन नोट कर लिविंग हैप्पी हैप्पी लिविंग हैप्पी इसमें बाकी को लिंक दे दीजिए लाइव आ जाएगा अभी आएगा देखिए
अभी आप 9th आर्म्ड वेटरन डे जो कि 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जा रहा है एयरफोर्स स्टेशन जालाली वेस्ट बेंगलोर में। अब हम म्यूजिकल प्रोग्राम मिलिट्री बैंड देखने जा रहे हैं।